Hi guys, welcome to my channel and today we are going to study about SQL। तो इस पूरी वीडियो में SQL स्टडी करेंगे। आप भी मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। So SQL is a standard language for assessing and manipulating database। इसकी full form होती है SQL की structured query language। SQL lets you assess and manipulate databases। SQL become the standard of the American National Standards Institute (ANSI), the 1986, and of the International Organization for the Standardization (ISO) in the 1987. What can SQL do? SQL can execute queries against the database। SQL can retrieve data from the database। SQL can insert records in a database, update कर सकता है, delete कर सकता है, create कर सकता है new databases, create new tables, create stored procedures in the database, create views in the database, create set permissions on the tables and the procedures and the views. So SQL is a standard, but although SQL is an NC ISO standard, there are different versions of the SQL language. However, to be compliant with the NC ANSI standard, they all support at least major commands like select, update, delete, insert, where। Select is for selecting। अगर आपको कुछ टेबल में से सिलेक्ट करना है तो उसके लिए select कमांड यूज़ होती है। अपडेट इज अगर आपको अपडेट करना है कुछ भी टेबल में तो अपडेट। डिलीट अगर कोई भी कॉलम या रो डिलीट करनी है तो उसके लिए इंसर्ट अगर इंसर्ट करना है। वेयर इज अगर फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे है। मोस्ट ऑफ द एसक्यूएल database programs also have their own proprietary extensions in the addition to the SQL standard. Using SQL in your website to build a website that shows a data from the database, an RDMS is relational database management system होता है। Program that is MS Access SQL Server तो MySQL यूज़ कर सकते हैं। To use a server side scripting language PHP या फिर ASP यूज़ कर सकते हैं। To use SQL to get the data you want, to use HTML CSS to style the page. Now RDMS क्या होता है? Relational Database Management System। RDMS is the basis for SQL and for all the modern database systems such as MS SQL Server, IBM, Oracle, MySQL, and the Microsoft SS. The data in the RDBMS is stored in the database objects called the tables. A table is a collection of the related data entries and it consists of the columns and the rows. Look at the customers table। Now select star from customers। तो star यहाँ पे denote करता है all के लिए। तो अगर आपको all the details चाहिए तो हम कैसे प्रिंट करेंगे। नाउ ट्राई इट योरसेल्फ। तो हम ट्राई करके देखेंगे। रन एसक्यूएल करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई। किसकी डिटेल्स आई? कस्टमर नेम आ गया, कस्टमर आईडी आ गई, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं? 91 है। कस्टमर ने कॉन्टैक्ट नेम आ गया, एड्रेस आ गया, सिटी आ गया, पोस्ट कोड आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है। Now every table is broken into the smaller entities called the fields. The fields in the customers table is called the ये सारी चीज़ें हैं। A field is column in a table that is designed to maintain specific information about every record in a table. A record also called as row as each individual entry that exists in a table. For example, there are 91 records in the above customer table. A record is horizontal entity. In the table, a column is a vertical entity in a table that contains all the information associated with a specific field in a table.